हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लीडकोड 2438 विच इज़ प्रॉब्लम ऑफ द डे, रेंज प्रोडक्ट क्वेरीज ऑफ पावर्स। तो मैंने आज ऑफिस में लंच आवर में सॉल्व कर लिया था, लेकिन देखते हैं इसको दोबारा। ओके, सो लेट मी रिमूव दिस सॉल्यूशन। तो गिवन ए पॉजिटिव इंटीजर n, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ज़ीरो इंडेक्स एरे कॉल्ड पावर्स। तो कोई भी हमको एक पॉजिटिव इंटीजर दिया रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर, करस्पॉन्डिंगली वी विल बी गिवन ए पावर्स एरे। तो इट विल कंपोज ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ पावर ऑफ 2 दैट सम्स टू n। तो दिस विल कंसिस्ट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ power of 2 that adds up to n. Okay. So yeah, then the array is sorted in non-decreasing order and there is only one way to form the array. तो ये array sorted रहेगा नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर में, एंड देयर इज़ ओनली वन वे टू फॉर्म द array। ओके, एक ही तरीका है इसको फॉर्म करने का, एंड मतलब उनके कॉम्बिनेशन सॉरी से नहीं होंगे। एंड यू आर ऑल्सो गिवन ए ज़ीरो इंडेक्स्ड 2D array queries where queries of I is left of I and right of I, and each of query of I represents a query where you have to find product of all powers of it। तो फॉर एग्जांपल एक क्वेरी अरे दिया होगा हमको, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है, तो अगर क्वेरी इज़ 0 and 1, सो बिटवीन इंडेक्स 0 and 1 इन द पावर्स अरे बोथ इंक्लूसिव, हमको उनका प्रोडक्ट लाइक हमको उनका प्रोडक्ट कैलकुलेट करके एक आंसर अरे में रिटर्न करना है। एंड रिटर्न एन अरे आंसर्स इक्वल टू लेंथ ऑफ क्वेरीज, एंड बिकॉज हर एक क्वेरी के लिए एक आंसर होगा, देन वेयर आंसर ऑफ आई इज द आंसर टू ith क्वेरी। सिंस द आंसर टू द ith क्वेरी में भी लाइज, तो हमको मॉड्यूलस के साथ रिटर्न करने होगा। तो हम जल्दी से एग्जांपल्स का वॉक थ्रू लेते हैं। जैसे एग्जांपल ये 15 है, तो इस केस में जो पावर्स अरे है हमारा इस कॉम्बिनेशन ऑफ 1 2 4 and 8। सो 8 + 4 is 12, then 14, then 15। तो मतलब ये जो स्टेटमेंट है ना कि देयर एग्जिस्ट ज़ीरो इंडेक्स अरे कॉल्ड पावर्स कंपोज्ड ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ पावर ऑफ 2 दैट सम्स टू n। तो बेसिकली दिस इज डेफिनेशन ऑफ बाइनरी representation of this number, like binary representation of this number and उसमें से जहाँ पे पावर्स ऑफ 2 है, मतलब जहाँ पे 1 है, वो वाले नंबर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर 15 वी कुड राइट 1 1 1 1। तो दिस इज 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3। सो या, एंड तो फिर 0 and 1 के बीच में, तो 0 and 1 2, then 2 and 2 is 4, then 0 to 3, मतलब 2 into 4 into 64, that makes 64, 2 is 128, 2 is 512, मतलब जो भी। लेकिन हमारे केस में जो अरे है वो ये है, तो 0 to 3 will be like 1, like 0 1 2 3, so this will be 2 8 64। so yeah, so let's code it। so we need a method that returns binary representation of the number। तो हम ले लेंगे private method that will return string, and let's call binary representation। we'll take n as input, तो हम n input ले लेंगे। अभी take a string builder sb equal to new string builder। और इससे मेरे को याद है कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हम सेगमेंटरी पढ़ने वाले हैं, तो अभी मतलब वो वीडियो पेंडिंग है,
एंड ऑल्सो वो जो क्वेश्चन था फ्रूट्स इनटू बास्केट 3, वो सेगमेंट 3 से हमने सॉल्व नहीं किया था, तो वो भी पेंडिंग है। तो वो मैं वीडियो वीकेंड्स पे बनाने का ट्राई करता हूँ। नो, तो वाइल हमारा n बड़ा है 0 से, हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक इंटीजर temp, and temp will be nothing but n modulus 2, and so we'll take a character c which will be equal to 1, so which will be equal to, if temp equal to 1, so it will be 1, otherwise it will be 0, right? And we will append sb dot append so sb dot append c, and so ideally देखो, जब हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालते हैं तो वी लाइक हम उस नंबर को 0 तक बनाते हैं, राइट? तो द रिवर्स ऑफ दैट इज़ द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर। तो हाईएस्ट हम लोग को हाईएस्ट रिमाइंडर पहले मिलता है, देन उससे छोटा तो, और हमको हर बार n को डिवाइड करना पड़ेगा, n डिवाइड इक्वल टू 2, एंड तो हमको रिवर्स करना है। लेकिन जो हमको पावर अरे बनाना है तो हम लोग को ईजी पड़ेगा अगर हम स्ट्रेट अवे मतलब एज इट इज़ भी रिटर्न कर दें उसे। तो वी विल रिटर्न sb dot to string, and let's check the maximum limit of n. So the maximum limit of n is 10 to the power 9, which makes our strings maximum length to be 31. Like it can be 31 or like around 31 characters long, right? So what else do we need? So we need to construct a power array, so we will take int. So okay, we don't know length of the power array, so we'll take it as a list of integer, and we will call it power equal to new. We'll take array list, and yeah, so for okay, so first we'll get a string binary representation equal to bin representation of n, then for each character c in bin representation dot, we'll convert it to a character array and array character c के लिए. So and so we need few things. So we need an integer, and we are assuming there won't be any overflow. So integer current equal to 1, then yeah, so if character c is equal to 0, we can continue, and we need something that will become the power. So initially the power will be 0, so we can increment the count, and the current will be equal to current, and we can right shift it, like left shift it by count. Yeah, and we have to like append, so power dot add current. Okay, so for example 15 के केस में हमारा रिप्रेजेंटेशन आएगा 1 1 1 1, दोनों तरफ से सेम ही है। तो फर्स्ट केस 0 नहीं है, तो काउंट विल बी लाइक ओके, अदरवाइज भी हमको काउंट बढ़ाना पड़ेगा। तो इनिशियली काउंट 0 है, तो द नंबर 1 विल रिमेन 1 एज इट इज़, तो 1 इंसर्ट हुआ, देन काउंट प्लस प्लस हो गया, काउंट हो गया 1, तो अभी 1 राइट शिफ्ट हुआ, 1 0 बना, it becomes 2, then it will become 4, then it will become 8. Okay, so yeah, that looks fine. Now for each of the like query in queries, okay, so what do we have to do? So for int
I is equal to query of 0, I less than or equal to, so both are inclusive, query of 1 I प्लस प्लस. सो बेसिकली हम लोग ऐसा नेस्टिंग कर पा रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम जो पावर्स अरे का लेंथ होगा इट विल बी 31. सो दिस रेंज एट मैक्स कैन बी 31. सो इवन इफ ही ट्रेवल्स each time like 31 and 10 to the power like 5 times, which is the upper limit, it still is like 31 into 10 to the power 5, so which can be done in O of n, or even better solutions will work. So but this will also work, so हम ऐसे ही करेंगे. Then we need an answers array, so we will create an answer int and its size will be equal to int length equal to queries dot length. Okay, then this becomes of size len, and we will straight away return answer. Now अब बीच में हमको क्या करना है, हमको फिल करना है वो जो नंबर 7 से. तो each time we will take long current to avoid overflows equal to this current will be equal to let's say 1. We'll initialize it to 1 and then each time we will do what, current is equal to current multiplied by power dot get I and modulo mod. As it is given in the question, we have to take modulo each time. And at the end of each iteration, so we'll have to maintain a left or some pointer is equal to 0. Then at the end of each iteration we will do we will set the left value to current, and it's like integer value of current, and and we need one mod, so we need final int mod is equal to 1 underscore 0 0 0 0 7. So this will be our modulus. So let's test it against the custom input. Adios, amigo. Powering off. So okay, what it says is cannot be connected to character array. Why? Okay, for each char c character. Okay, the spelling of character is wrong. Long current, the variable current is already okay, so we already have current, so we will name it current new. So copy it, so we will name it current new and current new. So let's see. So index 0 out of bounds for line 0. Okay, so if c is 0, okay, but when can it be 0? Let's check power. So we have initialized power, we are adding to it current for each binary representation, and we are appending it to c. So let us do some debugging. So system.out.print ln. We'll first check bin rep, what it's the bin rep. So let's check by printing it. So bin rep is 0 0 0. Okay, why is it 0? So if it is 1, then so if it is 1, then okay, so temp is never like temp is an integer, so we were checking it with character. So now it should work. So if temp is 1, okay, 1. So what is outputting? So current is like
current new into power get I. Let us print power system dot print powers power power. So let's see what the power contains. And okay, so it is like 64, it is 64 at the end. So the issue I guess is where, okay, so this should not be current, it should be in temp, and this temp should go in power, because we should not be updating current, but we should be updating the temp, which is like each time we have to write shift 1 by that power. So it's basically equivalent to math dot power of current by count. Like this is what we're doing. So yeah, let's submit it, but before that we should remove these print statements and we'll submit it. So yeah, I guess, yeah, so coming to the time complexity analysis, this number is giving us the binary representation of this n. So this is one time operation, this runs of log base 2 n, so which is at max 31 operations. Then that is nothing. Then major operation is this one, which runs up to 10 to the power 5 times in the worst case. So yeah, that's it for this video. We'll see you in the next one.